Prashant, good evening. Am I audible to you? Thanks for confirming, Prashant. Ankit, good evening. Hi, Mohit. Manan, good evening. Prashant, did you watch our video about voting? Vote to save India. Yes, sir. You agree with the views that I have given there? There are a lot of Gobar Bhakts riding a lot of Gobar there. Prashant is in 100% agreement. Good, good, good. Prashant, you're on the right lines. Do your bit to save India. मेरे को वोट करने की जरूरत नहीं है. I will never stand for any election. ठीक है ना? Neither am I competent, nor I am inclined. ओके ओके he meant आप. ओके ओके या आपका मतलब करेक्ट करेक्ट आम आदमी पार्टी. या करेक्ट करेक्ट मे बी दैट. तोमर मोदी हटाओ देश बचाओ. Good, good, good. Lot of sensible guys. Okay, we'll wait for 2, 3 more minutes, then I'll start talking. Yes, so sir, serious exam, these admissions are affected. I guess because of this attendance. Otherwise, it was always 50 attendance, 16 today. Okay, Mohit Negi. Mohit, that's absolutely fair. I like fair and square communication. You may not agree with me, is absolutely fine. And seeking my guidance where you feel is relevant makes sense. Absolutely. I'm absolutely with you. I like people who are straight and clear in their communication. I myself like to believe that I am like that. Okay. No, I will not tackle questions related to politics. We will keep to SSB as a subject for the time being, because that's the agenda. I'm no expert in politics, but I do guide my students and whoever connects with me. I consider that my responsibility, that I try and explain the truth to you people as best as I understand. Okay. Now, before I start taking your questions, few
words of advice from my side, which are very important for all of you to understand because this realization is very much lacking in the society. You see, when the selection system started working, there were no coaching academies. And some of the aspirants who attended the first SSB ever got recommended. And they were selected because they met the criteria of being selected. The selection criteria today in April 2024 are exactly the same as they were when the first SSB took place. So, hypothetically speaking, a candidate who got selected in the first SSB will get selected today as well. Now, in between, a large number of coaching academies have come up, and in their attempts to help the candidates and guide them, they have created a lot of confusion and a lot of misconceptions have got created. One biggest flaw in their approach and the wrong thing which they have done to the society is that they have brought the focus onto the SSB process rather than personality development. In case a person gains great expertise about the SSB process and tries to manipulate his or her way through, the maximum gain a person can make by this knowledge is not more than 5%. So, whatever you are trying to learn from these coaching academies, the standard coaching academies, I mean, is a gain at maximum of 5%. And because of this, you are neglecting 95%. Fine. Now, having worked in the selection system and now having been guiding students for almost 10 years, uh, I have realized that if an aspirant focuses on the following four things, then he or she can increase his or her chances of getting selected greatly. That is the 95% part. And I will enumerate these. Most important aspect for a student is academic competence. For a working professional, substitute academic competence with work competence. Allocate it a weightage of approximately 35% in your overall chances of being selected. Next aspect comes is your ability to communicate your ideas verbally as well as in writing. Allocate it a weightage of approximately 30%. So these two things combined account for a weightage of approximately 65% overall. The third issue comes is physical fitness. Allocate it a weightage of approximately 20%. A word about physical fitness I would like to add is this is something which practically no coaching academy would be talking about. The reason is very simple that in their 15-20 day plan, physical fitness cannot be altered. So they don't talk of it, but it is important. So together, all these three factors, they take care of approximately 85%. Allocate the balance weightage of 15% to your general awareness. This takes care of 100%. And in overall scheme of things, 95% chances of your selection would depend upon these four things. So it makes a lot of sense for all of you people to focus upon improving in these four factors. With this as a background, I am ready to take on your questions and
as I said, I will not be taking the politics related questions. Whatever I had to say, I have said in my video. And question and answer session also, I think I had of a student that has also been posted. That should suffice. Sir, I will take this. Sir, is there any guidance program for working professionals? As I have appeared 7 times in SSB, 2 times conference out, 5 times screened out. I need guidance from you without resignation from job. Shivam, actually, if you go to our website, which you should have done, our guidance program has been designed for to cater for people like you only. It's absolutely ideal for you. You don't have to resign from your job. You don't have to go anywhere. We have an online guidance program, and the people who enroll for my guidance and who are not working, I keep pushing them to start working because when you work, it adds value to your personality. And sitting at home, you get rusted. Fine. So just you are most welcome to join our guidance program. Just visit our website. You can speak to Yogita Madam, the number given on our website, and you'll get clear of the formalities. Fine. You're most welcome to join. And I hope I'll be able to guide you, of course, and help you attain your dream. Yeah. Thank you. Sir, is the first attempt a golden attempt? ये लोग बात करते हैं गोल्डन वोल्डन की बात ऐसा है नहीं यार हमारे पास 19th अटेम्प्ट में भी पास हुए तो उनके लिए तो 19th ही गोल्डन था 21st में जो हुआ उसका लिए 21st गोल्डन था one thing which has relevance is that in your first attempt some benefit of doubts you can get. I will explain this with an example which will clarify that thing to you well. I had one girl student who went for SSC Tech entry, and in her first attempt, she had qualified, but she did not make it in the merit. After that, she joined my guidance program, and after that, she never qualified SSC. Never. Since I know her story well, I will explain to you. Now, when this girl came to me, she was basically her reasoning ability, her practical sense, her understanding, uh, physical fitness, nothing much, GK, nothing much. But overall, she was okay. She was, to some extent, you can consider a selectable candidate, and she got selected. When I spoke to her, she was a student of electronics and communication, and she could not give any satisfactory answer to her field of knowledge. So I asked her, did the interviewing officer ask you anything related to your field of knowledge? I already knew the answer. She said no. So in this case, what happened? Since generally she was okay, the interviewing officer perceived wrongly that her technical knowledge would also be okay, which actually was not. And technical knowledge not being much okay is not a big deal. But the big deal part was that for 4 years, what she had done in her engineering, she had been an insincere student. And this is something which is unpardonable. I told her that and you are not fit for selection. You were lucky you got selected. You got a benefit of doubt. You are unfit for selection actually. You got to improve your core subject knowledge. You got to improve your general knowledge. You got to improve your physical fitness. All these things you are not measuring up. Because she was insincere, she kept talking to me. She did not work sincerely enough on all these issues, and she kept getting rejected 5, 6 times. After that, she gave up talking to me. Fine.
because she was insincere towards me also, or towards her preparation, that her default setting in life was insincerity. Fine. So with this story you can gather कि फर्स्ट गोल्डन है या क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ये मिल सकता है, सेकंड चांस ऑनवर्ड इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता, पर जो ओवरऑल फिट है उसके लिए दिक्कत नहीं है, और ओवरऑल जो अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ा लेता है उसके लिए कोई सा भी अटेम्प्ट हो, ही विल मेक इट। फाइन, I hope I have answered this question adequately. Yeah. Sir, Akash Singh is asking, it is not related to SSB. I have another question. How to tackle a condition where a very close friend suddenly starts going away from you and ignoring? It is hard to deal with it. What is your take on it? Okay, fine. It's a very pertinent thing. Such things we keep facing in society, and individuals have their varying needs. Some people have needs for achievement. Some people have need for affinity. Yaro ka yaar hona. So those things are predominant in the parts of their personality. I will not comment on these issues, but I will give you a general advice. Thing is that you should uh, have a certain set of values which should guide your life. That should be your guiding compass. Whatever your sense of priorities and values are, that's you have to decide. I should not be legislating for you. Fine. Now, invariably, peers would like people to conform to their norms. फाइन, कि शाम को 3 घंटे गप मारनी है इंजीनियरिंग कॉलेज में, या क्लासेस बंक करनी है, अटेंड नहीं करना, खाली जो है लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करनी है, एंड होप फॉर द बेस्ट. व्हाई आई एम सेइंग दीज थिंग्स? बिकॉज since I have been interacting with you people for over 12, 13 years, I have realized that is the culture which exists in most of the engineering colleges of our country. So now your group of friends or colleagues or whatever you call them, they would like you to conform to this culture. And if you are not conforming, then they will do this kind of things, ignoring you and all that. हमारा साथ तो देते नहीं. My advice to each and every one of you is, do not fall prey to this stupid culture. This will not take you ahead in life. यारों के यार बनने से अपनी जिंदगी तबाह करना बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है. डोंट डू इट. One more important thing I will tell you, that if you are a solid person and you are sticking to these values, there are very, very high chances that you would be having clarity in your core subjects. तो ये तुम्हारे जो पियर्स हैं, जो पिक्चर देख रहे थे, जो गप मार रहे थे, जो टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो इम्तिहान से पहले आपके पास आएंगे पूछने के लिए. तो वो आपको इग्नोर करने वाली सारी चीजें तो उनकी निकल जाएंगी. फाइन. तो एंड if you look in the context of your peers, what are you looking for? Who do you value as a friend? कि जो क्राइसिस में आपका साथ देगा या पिक्चर देने में साथ देने वाला है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली द आंसर है जो क्राइसिस में साथ देने वाला. लड़ाई झगड़ा जो हो जाए तो आप भरोसा कर सकते हो कि छोड़ के नहीं भाग जाए, या मैं अगर दिक्कत में फंस गया हूं तो ये मुझे दिक्कत से निकलवा सकता है. बी दैट पर्सन. उनके साथ गपशप मारने घूमने की जरूरत नहीं है. फाइन. This is my advice. I hope your question has been answered adequately. Thank you. Sir, Gaurav Sharma is asking, sir, please suggest how to prepare for technical questions, technical SSB entry,
I am not doing job in that same subject in which I had done my graduation. Please guide me how to tackle the questions related. Since I'm very blunt in answering things, I'll be very blunt with you. ये बहुत ही घटिया क्वेश्चन है और ये बड़े घटिया माइंडसेट से ओरिजिनेट हुआ हुआ सवाल है। पर ये हिंदुस्तान के एस्पिरेंट्स 90% इसी माइंडसेट से है और वही कोचिंग एकेडमी जाते हैं। कितने ही मैं लिखता देखता रहता हूँ वो कि यार वहां पे कौन से एसएसबी में लेक्चरेट में कौन से टॉपिक आ रहे हैं, जीडी में जीटीओ कौन से टॉपिक डाल रहा है। बकवास। इस एटीट्यूड से जिंदगी में आप जो है रेकमेंड भी हो गए ना तो घटिया अफसर बनोगे, एक नंबर का घटिया। ठीक है ना? प्लीज डोंट एस्पायर टू बिकम लाइक। और कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका जो है टेक्निकल फील्ड के क्या सवाल इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछे। अब डिपेंड करता है उसका मूड क्या है। एक से एक चीज बात पूछी, दूसरे से दूसरी बात पूछी। द मेजर थिंग इज दैट मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर खुद रहा हूं। मैं आपको कुर्सी से उठ के तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक मैं 100% क्लियर नहीं हो गया हूं कि आपकी जो ये 15 ओएलक्यू जिसमें मैं जज कर रहा हूं उनमें एडिक्वेसी इनएडिक्वेसी का जजमेंट मेरा ठीक हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आपके कोर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी सस्पेक्ट है, आपका प्रैक्टिकल थिंकिंग सस्पेक्ट है, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्पेक्ट है, आपकी सिंसेरिटी सस्पेक्ट है। ये 4 साल में जो बंदा अपने सब्जेक्ट को ठीक से नहीं समझ रहा वो आगे ऐसे ही करने के चांसेस हैं। ठीक। तो आपके लिए जवाब ये है बच्चे, ऐसे सवाल डालने जिंदगी में कर दो बंद और अपने बेसिक्स को करो साउंड। और ये मान के चलो कि अगर आपके बेसिक साउंड नहीं है तो आपको पढ़नी चाहिए लात एसएसबी से और आपका सिलेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो किस्मत अच्छी है, जैसे मैंने एक कहानी आपको। ठीक है। पर वो एक बार में लकी वो लड़की हो गई, उसके बाद जिंदगी में ना हो पाई, किस्मत के भरोसे नहीं हो। ठीक। तो दैट इज द थिंग, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट क्या आंसर है, क्या जीडी टॉपिक है, क्या वो है। इट्स एब्सोल्युटली घटिया वे ऑफ प्रिपरेशन एंड आउटलुक इज वेरी वेरी घटिया। पूंजी मास्टरों वाला। Fine. I look down upon it greatly. Yeah, thank you. Sir, one person is asking some family issues. Sir, I have a background of toxic parents' marriage life. It has affected my mental health in school as well as college. Currently, I am preparing for CDS. What questions might be asked by my IO? Don't get bothered. Once again, you cannot predict the kind of questions which will get asked. My advice to you is as follows. Firstly, answer honestly. Don't try to hide anything. And also, a very important thing is that if you believe that because of the environment at home, your competence is of an inadequate level, then your parents are blameworthy for your incompetence. You are sadly mistaken, and it is a misconception. You are 100% responsible for your competence. So sort that bloody thing out and stop blaming द एनवायरमेंट, स्कूल में ऐसा था, घर में ऐसा था। ये बकवास मैं बहुत सुनता आया हूँ, इंटरव्यू ऑफिसर रहा हूँ और 10 साल से गाइड भी कर रहा हूँ, यहाँ भी ये बकवास सुनता रहता। इट मीन्स नथिंग। फाइन, डोंट बॉदर एंड गेट इट आउट ऑफ योर माइंड। टेक स्टॉक ऑफ योर लाइफ, मेक एफर्ट्स टू improve your competence. Fine, and that will get you selected. और
तगड़ा एनवायरनमेंट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता, मुकेश अंबानी का बेटा भी चांसेस है कि वो रिजेक्ट ही हो जाता। या Yes, sir. Sir, Bharat Nayak is asking what is exactly expected from a candidate. I have some ideas: discipline, I am obedient, practical thinking, positive thinking, time management, fitness. Sir, what are they looking? आपको भाई साहब 4 चीजें मैंने बताई। आप जरा जो है वो 4 चीजें यहां लिख दो, along with the weightages I told। वही है बस, बहुत लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। लिख के दीजिए जवाब। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। या नेक्स्ट क्वेश्चन। Hmm. Sir, Saurabh Negi is asking, Sir, I do not have a job till now. Will it go against me in my interview? अगर आप घर बैठे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली। You have the potential to earn, but you are depending upon your parents' earnings. Also, you are not responsible towards the society because you can contribute by working, which you are not doing. तो ये 2 चीजें हैं, बाकी आप देख लो। और काम ना करने से, घर बैठने से आप रस्टेड ही होते हो, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काम करने से जो चीजें आप सीखते हो फील्ड में, काम करके वो घर बैठे आप नहीं सीख सकते। ये सारी चीजें हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव जो है अपना लगा लो हिसाब के साथ। ठीक है? या Yes, sir. अरे यार मोहित नेगी भाई, तुमने सवाल पूछा नहीं कोई। आपका सवाल मैं पक्का जवाब दूंगा, आपने बड़े आदमी हो, आपने क्लियर बात की बिल्कुल। Okay. नहीं, इज नॉट आस्किंग। No, he has not asked any हाँ, question. प्लीज आस्क मोहित। Okay. Ajay Goswami is asking, Sir, I am 23. After graduation, I have pursued my career in agriculture and animal husbandry. Will this have a bad impact? What do you think about this Not farming? at all, not at all. You could be doing anything. We have to see your overall competence. As I said, the 4 things. Be good at those things. Clear your CDS or AFCAT exam with good marks. Have clarity in academics, GK, fitness. Fine. क्या इशू है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता कोई। Ankit Anand is asking, Sir, I have cleared my JEE mains after taking a drop. Sir, what should I say in my SSB interview? मतलब आप झूठ बोलना चाह रहे हो कि ड्रॉप लिया नहीं था। मत करो भाई, ये झूठ वूठ हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है ना? हाँ, झूठ बोल बोल देख रहे हो मोदी जी के मुंह कैसे मुंह छुपा रहे हैं। कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोल रहा है कि नौकरी देना सरकार का काम ही नहीं है। और 2013 में शोर मचा रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल में। तब बहुत तेजी से बोल रहे थे आप। द बिगेस्ट इशू टुडे इन इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट। उसकी बात करते हुए जान निकलती है। तो झूठ बोल के क्या होगा? यही हाल होगा जो मोदी साहब का हो रहा है। डोंट डू दैट प्लीज। उन्होंने बुढ़ापे में काम किया, बचपन से आदतें मत सीखो। इनफैक्ट मोदी शुड गिव यू अ लॉट ऑफ लेसन्स इन व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ। ठीक है? हाँ, चलिए। Shaunak Kulkarni is asking, Sir, I have overcome one of my weaknesses. Should I mention it? हाँ, बड़ी अच्छी बात है, कर देना चाहिए। जब आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वहां लिखिए कि ये मेरी थी कमजोरी, इसको मैंने ठीक कर लिया। इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब अगर बातचीत करता है आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस, टेल दैट यस, गुड थिंग। Okay. Ashutosh Singh is asking, Sir, how psychologists connect and interpret TAT, VAT, SRT, SDT, and VAT? How will they? तू क्या करेगा साइकोलॉजिस्ट का बाप बन के? तूने पोस्टिंग जानी है साइकोलॉजिस्ट की, नहीं जानी ना। प्लीज डोंट बॉदर फॉर। अब देखो, आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपर प्राइमरली,
एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोएक्टिव नेचर। प्रोएक्टिव नेचर डेवलप करने का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल। और डायरेक्ट कंट्रोल में आपके थॉट्स और एक्शंस होते हैं। और जिंदगी में ज्यादातर चीजें आपके इन चीजों पे डायरेक्ट कंट्रोल वालों से ही फर्क पड़ने वाला है। इनडायरेक्ट कंट्रोल वो होता है जो आपके आस पड़ोसी, उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस आ रहा है आपका, जो आप करोगे उससे इन्फ्लुएंस होगा। जैसे आपके फादर का जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उससे इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे अदानी का बेटा है वो भी चोरी चकारी करेगा, सेटिंग करेगा, क्योंकि देखा बाप नहीं कर रहा जिंदगी भर, सक्सेस भी खूब मिल रही है। तो ये हुआ इनडायरेक्ट कंट्रोल। अब जो है, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, कैसे चेक करता है, ये आपके कंट्रोल में है नहीं है, पर आप उस पे जोर डालना चाहते हो। आप अपना डालो कि क्या है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की बात करें, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी साइकोलॉजी कि आप, आपका पर्स चोरी हो गया, उसमें आपका एटीएम कार्ड भी चला गया, क्या करोगे आप? तो भाई आप सबसे पहले फोन करके एटीएम को ब्लॉक कराओ जिससे अकाउंट से पैसा ना निकल जाए, एफआईआर रजिस्टर करो, और पैसा वैसा अपना करने का साधन जो है दूसरी तरह से करो, यूपीआई यूपीआई वगैरह से। दैट इज व्हाट। अब इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। क्या पड़ रहा है, तो आपने विजुलाइज किया कि भाई ये यंग है, 14-15 साल का लग रहा है, तो शायद अपना 9th वाइन्थ का एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। तो आप लिखोगे कि भाई इसने मेहनत मेहनत की और अपना जो था टारगेट अकम्प्लिश कर लिया, स्टोरी हो गई। तो अब इसमें कौन सी ऐसी बड़ी साइकोलॉजी आ गई? जस्ट टू डू विथ योर कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग, अप्लाइंग विजुअलाइजेशन। तो ये चीजें करनी है। और कौन जो साइकोलॉजी का पीएचडी किए बैठा है, उसमें ये आपसे दिमाग कहां से सुपीरियर हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है ना? जिसने प्रैक्टिकल जिंदगी जी हुई है, ये, और हर responses may be better than what the psychologist, if that person had attempted this test of writing stories and SRT। ठीक, तो ये चीजें करने की है। अपनी चीजें ठीक ठाक रखो, आंख कान खुले रखो जिंदगी में, पढ़ाई वगैरह ठीक से करो, विजुलाइज करो कि पढ़ाई की एप्लीकेशन क्या है, जनरल नॉलेज हो रही है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तब जान लेना, जब साइकोलॉजिस्ट बनना हो फिर कभी तो। ठीक है क्या? ओके, थैंक यू। Sir, Ankit Anand is asking, sir, how to maintain balance between social life and personal ambitions. I tend to isolate myself for my ambitions. Sir, will this affect me? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये मिसकंसेप्शन ये भी बहुत लोगों का है कि यारों के साथ घूमना जो है ये बहुत बड़ी, इससे सोशबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है। कुछ नहीं है। ठलुओं के साथ अपना ठलुआगिरी करके निकम्मे बनोगे आप भी। डोंट डू दैट। अगर आसपास जो आपका सर्कल है, प्रोक्सिमेट कलीग्स का, वो इस किस्म के लोग हैं, डोंट हैव टू फॉलो देयर कल्चर। ठीक है ना? दैट इज द राइट थिंग टू डू। आई मीन व्हेन आई जॉइंड माय बटालियन, मेरे सारे जो थे रम और रमी का कल्चर था मेरे में। आई नाइदर प्लेड रमी नॉर आई ड्रैंक रम। ठीक है? एंड आई रियलाइज कि इट डजंट मेक सेंस। दे टोल्ड मी ये कल्चर है, it doesn't make sense. Also another culture which was very popular in my unit was कि बेईमानी करना हर देना। I did not believe it, neither I subscribed to it, nor did I do it। ठीक है? तो ये है, you have to decide yourself what to do, what is right wrong। आपको कॉन्शियस दिया है, ये कंपास भगवान सबके भेजे में डाल के रख देता है, उसको यूज करिए यार।
ठीक है, इतना आस पड़ोस से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, फायदा नहीं होगा उससे। या Yes, sir. Sir, Akash Singh is asking, but sir, for GTO tasks, PGT, HGT practice is required for ground. Then what to do? Means you told four things and then GTO. ठीक है, ओके फाइन। तो आकाश, मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि जो पहले एसएसबी में बंदे गए वो कैसे जीटीओ टास्क में पास हुए, या उनको भी छोड़ देते हैं। मैं अपना ही केस ले लेता हूं, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, मैं पहली बार में ही गया और मैं रिकमेंड हो गया। आपके टाइम में तो अब यूट्यूब वगैरह में चीजें दिख भी जाती हैं, हम भी अपने नो फ्रिल्स एकेडमी में इनको डिस्कशन भी करा देते हैं इन चीजों का। अब मैंने तो किया नहीं था कुछ, कैसे हो गया? जवाब दो आप। जो जीटीओ सीरीज है वो आपकी क्वालिटीज को चेक कर रही है ना। आप फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग देख रहे हो आप, क्योंकि कोचिंग एकेडमी का माइंडसेट ने इतना ज्यादा आपको अफेक्ट कर दिया है। हम देख तो ये रहे हैं कि बंदा ओवरऑल ठीक ठाक है कि नहीं है, ये कहाँ देख रहे हैं कि बल्ली फट्टा है में क्या कॉम्पिटेंट है। लोग गांठों की प्रैक्टिस करते रहते हैं, दे ट्रीटेड एज के गांठ बांधना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो गांठ बांधने जानने वाला है तो वो जीटीओ में उसके हाई सक्सेस रेट हो जाएगी। वो बुलशिट, इट मींस नथिंग। बट अब मिसकंसेप्शन का तो क्या कर सकते हैं। तो ये बात है, ठीक है ना, ये आपका मिसकंसेप्शन। आप वही कह रहे हो ना कि भाई जो हो रहा है उसको ही देख ले। फिर तो वही बात आ गई कि भाई स्टोरी लिख रही तो लिखते रहो स्टोरी, सिचुएशन रिएक्शन करते रहो सॉल्व उसे। उससे आपका दिमाग कहां से तेज हो जाएगा? नहीं होगा। मैं जब गया था, मेरे साथ एक कोचिंग एकेडमी से आया हुआ था, मिनर्वा एकेडमी, शायद मेरे ख्याल से और थी मिनी एकेडमी बोर्ड में, या मैं तो जानता नहीं, वो था चंडीगढ़ की, वहां से गया था, पुरानी है ये एकेडमी। वहां उसने कोचिंग कोचिंग ली थी और 3 रिपीटर थे, 10 का ग्रुप था। तो शुरू शुरू में वही आगे चल रहे थे पीजीटी में, हम हमें पता नहीं था वी आर फॉलोइंग देम। बाय द टाइम वी रीच पीजीटी 3 वी हैड रियलाइज कि ये तो मरवा देंगे, इनके बस का नहीं है, दे डोंट हैव इनफ सेंस। फिर एक हमारा एंड्रू था मेरा मुंबई का, और फिर और मैं था। देन वी लेड पीजीटी 3 ऑनवर्ड्स एंड वी ओनली गॉट रिकमेंडेड। ना ये मिनर्वा वाला हुआ, ना ये रिपीटर हुए। तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। हमें शुरू-शुरू में नहीं आइडिया हो रहा था ये फट्टा-वट्टा कैसे लगेगा। जब देखते हुए आइडिया होने लगा, भई अच्छा यार ऐसे बन रहा है ये, कैंटिलीवर ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। व्हाट्स द सेंस ऑफ इट? तो when that happened with me, why should it not happen with anyone else? क्वालिटी को ठीक-ठीक असेस कर रहे थे तब। आप, these are my answers. If you have further questions, you can post again. है नहीं जरूरत, आप उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हो, एसएसबी प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो, वो है नहीं। दैट इज 5% में आप इसका डेसिमल 0.5% वगैरह कुछ गेन करोगे यूट्यूब में देख दाख के। 95% तो ये चीज है। Sir, Abhishek सुन Dixit भी is जाऊं के लिए asking, आप उनको ना। sir, this will be my ninth attempt. I got recommended in my eighth attempt from 17 SSB Bangalore board, but got merit out. Now in the same board, I have got SSB 17 SSB Bangalore. What different questions will I face? The interview officer will be. मेरे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं 17 एसएसबी में डिप्टी प्रेसिडेंट था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। पर मैं एक बात बता सकता हूं कि तेरा एटीट्यूड ऐसा है कि तू रिजेक्ट होने लायक है। तो पहले से कुंजी चाहिए, ये पूछा जाएगा, नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। प्लीज चेंज योर एटीट्यूड,
कैसे सेलेक्ट हो गया, चलो जिस वजह से भी हो गया, ठीक ही हुआ होगा सेलेक्ट। तो अब जो है इस एटीट्यूड को मत रख, ओवरऑल अपनी कॉम्पिटेंस इंप्रूव कर ले एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर रिटन एग्जाम वाली एंट्री है तो रिटन में अच्छे मार्क्स ले ले, वो तो खैर पहले ले लिए होंगे जो भी हुआ होगा, एंड try and improve upon your all round abilities, the four things that I said. That will do you good. This knowing the questions and then preparing the answers and all that is the wrong attitude. It can get you rejected. Don't do that. Yeah, thank you. Okay. Sir, Ayush Sharma is asking, Sir, I am unable to join a job right now because of my MBA college as well as MBA college interviews. And now the employers are asking me to sign 1 year bond. Should I sign and join? बिल्कुल साइन कर दो. None of these rascals can enforce these bonds in the court. These are illegal. ठीक है ना? आप बेझिझक होके उनसे कहोगे 5 साल का करा लो साइन मेरे से, और जब एसएसबी में सेलेक्ट हो जाओ अंगूठा दिखा देना उन्हें, उन्हें बोलो कर लो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते आप. ठीक है, बहुत लोग इससे डरते हैं. आई डोंट ब्लेम दिस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो बिकॉज़ दे नीड कंटिन्यूटी. उनका बड़ा रिक्रूटमेंट में खर्चा होता है, सिलेक्शन में एचआर डिपार्टमेंट, ये वो कंसल्टेंसी फर्म्स आते हैं, तो ये सब कर करा के वो करते हैं, और छोड़ के आदमी चला जाता है तो होता ही है, फिर से फ्रेश ट्रेनिंग करानी पड़ती है. दोस थिंग्स आर देयर. तो इस हिसाब से वो कराते हैं, इसको कर नहीं सकते. मेरे एक दो स्टूडेंट रहे हुए हैं. एक का एग्जांपल बताता हूँ. टेक महिंद्रा में काम कर रहा था, उसको बॉन्ड था, तो बोला गया भाई इतने पैसे जमा कराओ. तो मैं बोला सर क्या करूं, मैंने कहा बोला एक पैसा नहीं दूंगा मैं, कर लो जो करना है. Finally, cut a long story short, he joined naval aviation. He is flying aircrafts in Navy. There is just no problem. He did not pay even 1 rupee to Tech Mahindra, and Tech Mahindra could do fuck all to him. ठीक है, कर लो जितना साइन कर दो, आराम से करो, बेझिझक होकर करो. या Yes, sir. Sir, Anvish Dixit is asking, sir, in my previous attempt for SSB Varanasi, the interviewing officer asked me about my personal relationship and all. At that time, I had earlier, but now I do not. How should I elaborate this again? This whole scenario, if I must. I give you a broad answer. I don't get into all this nitty-gritty. सच सच बोलो जो है. या तो ये अगर ये होता कि रिलेशनशिप होना ये क्राइम होता तो लिख दिया होता कि भाई जिसकी रिलेशनशिप है वो ना अप्लाई ना करे. ऐसा तो नहीं लिखा. दैट्स ओके. बी ऑनेस्ट, बी ओपन. दैट इज माय ब्रॉड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. ठीक है ना? छुपाने वाले तो कोई फायदा नहीं होगा. या थैंक यू. Sir, Ankit Anand is asking, sir, how to be truthful about past failures and mistakes, and still be myself and present myself as a suitable candidate for NDA. वही है ना, छवि बनानी है. मोदी साहब से शिक्षा ली है. छवि घड़नी, करोड़ों का खर्चा, और जो कि झूठी छवि है. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबसे बहुत बड़ी करप्ट है. ये छवि पवि के चक्कर में मत, सीधी सीधी बात करो. इंटरव्यू अफसर गधे नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई समझ जाए. प्रेजेंट करने के चक्कर में मत रहो कि मैंने मैनिपुलेट करके इसे यूं घुमा दिया. वो तुम्हारा पड़ोस में कोई सेलेक्ट हो गया हो, ऐसे बकवास सुना रहा होगा. डोंट बॉदर फॉर दीज इडियट्स. ठीक है ना? सीधी सीधी बात करो. दैट मेक्स मोस्ट सेंस. ये सुना होगा ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये किसी गधे ने नहीं बात कही थी, ये सही है बात. ठीक है, प्रेजेंट करना, सच सच बोल दो. अगर तू लायक होगा सिलेक्शन के तो होगा तेरा सिलेक्शन, अगर तू नहीं होगा तो तेरा नहीं होगा. जितना मर्जी तू छवि गढ़ ले, नहीं होगा उससे. समझा?
So Rahul Singh is asking, so after completing my graduation in 2022, I joined a developer's job for 1 year. I did it, but in 2023 I left. Then I started learning new technologies and also published a research paper. Will this put a negative impact? तूने जो भी करना है, अब मान लीजिए तू ये करते करते तू क्या, तू आईपीएल क्रिकेटर ही बन जाता, तो क्या था, नेगेटिव क्या है उसमें? फुटबॉलर बन जा, या तू आर्टिस्ट ही बन जा, पेंटिंग करनी शुरू कर दे, तो तेरी मर्जी है भाई। जर्नलिस्ट बन जा, कौन रोक रहा है? ये कहीं लिखा है कि जिसने डिग्री जो थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो लॉ का काम नहीं कर सकता? वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट चाहे रघुराम राजन वाज एन इंजीनियर, ही वर्क्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें क्या है? तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वंस अगेन फिर वही वही छवि वाली बात हो गई कि ना, इमेज का क्या होगा? अबे इमेज का जाने दो भाड़ में ना, तुम अपना काम करो, जो ठीक लगता है वो कर लो। व्हाट यू लाइक डूइंग, इफ यू आर गुड एट इट, डू इट द डैम थिंग, डोंट बॉदर ऑल दिस बड़ी छवि छवि बकवास। या थैंक यू। Yes, sir. निशान पवाडिया इज आस्किंग, सर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, जीएस मतलब इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब बोरिंग लग रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट रिटर्न। हाँ, ओके, तो ऐसा करो, एक जूता मोटी हील का लो और अपने सिर पे देके मारो घुमा के जोर से। उससे मोटिवेशन इतनी तेज आएगी ना, जितनी गुमड़ी बनेगी कि पूरे मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। मोटिवेशन नहीं आ रही, माहौल नहीं बन रहा, तो भाई मोटिवेटेड नहीं हो तो साले मत बनाओ सर फिर। Yes, sir. Sir, Shivam Kumar is asking, sir, my mind goes blank in VAT. What should it? तू तू निकल ले, तू परचूने की दुकान खोल ले, उसमें आटा तोलता रहियो, उसमें ब्लैंक नहीं होगा। आटा दाल दाल तोड़ना पड़ेगा। क्या ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं जवाब नहीं पता भाई। जो तू वर्ड से ही ब्लैंक हो गया तो दुश्मन उस्मन के आगे तेरा क्या होगा? तो भाग ही जाएगा ना, तो पैंट गीली करके भागेगा तू, तेरे जवान तुझे पकड़ के लाएंगे, फिर क्या करेगा तू? You will become a good leader, हैं? इतना डरपोक क्यों होते ना? इतना डरपोक आदमी जो वर्ड से ही डर रहा है, तो क्या क्या अफसर बनेगा वो? सुधार कर ले अपने में। नो, मेरे पास आंसर नहीं है भाई इसका ब्लैंक ब्लू होने को, मैं तो हुआ नहीं ब्लैंक, कैसे बताऊँ? चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. Sir, my last question we will take. Sir, Ramdas is asking, sir, I have a calm nature. Will this cause a negative impact during GP for छवि GP? छवि छवि बनाना, छवि गढ़ लो, छवि। मैं छवि को मार दे झाड़ू, काम नहीं चलो तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। आई हैव बीन अ बॉक्सर, आई हैव ट्रेन्ड बॉक्सर, उसमें भी कामनेस चाहिए, जो ठंडे दिमाग से सोच के डिसीजन ले, रैशनल, वो अच्छा है। जो इमोशनल डिसीजन लेगा वो बेवकूफ है, पिटेगा। ठीक है? नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, वो WAT वाला जो सवाल पूछ रहा था, उसका ऑन अ सीरियस नोट आंसर ये है कि तू ज्यादा सिलेक्शन का प्रेशर ले रहा है, ठीक है ना? इसलिए तू ब्लैंक हो रहा है, नहीं तो वर्ड में क्या ब्लैंक होने का डर है? तो डोंट टेक दिस प्रेशर। सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेवंस विल नॉट फॉल, द प्रॉब्लम बनता है बना दे। फिर ये खुराफात दिमाग में डाली होगी, ये कुड नहीं डालना, शुड नहीं डालना, ये नेगेटिव वर्ड है, डेथ है, फलाना है, ये इससे डर जाओ। डोंट गेट इनटू ऑल दिस। नाइफ से डर जाओ, मर्डर से डर जाओ, डेथ से डर जाओ, किसे नहीं डरना? जो वर्ड लिखता है, टीच रीडर एज एन एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस बना दो अपना। डेथ इज इनएविटेबल, मरना है सबने, ठीक है? हाँ, दैट्स इट। Yes, sir. बाकी repetitive है. सर प्लीज रिड्यूस योर फी, चार्जेस आर टू मच। कितना करे तू? हैव अ वर्ड विद योगिता मैडम बेटा, है ठीक है? वील कंसिडर, आई एम ऑलवेज वेरी कंसिडरेट। जो ज्वाइन करना चाहता है, मैं चाहता हूँ ज्वाइन करे और मैं उसको गाइड करता हूँ, ठीक है बच्चे? प्लीज स्पीक टू योगिता मैडम। अच्छा, और कोई ऐसा दिख रहा है? ये सब ले लिए है. ले लिया। हाँ, ये कौन था? बत्रा, हैरी बत्रा था ना? हाँ हाँ, हैरी नहीं, बैटलेस। हाँ ठीक है हैरी बेटा, हाँ करो, बातचीत करो, हाँ ठीक है। आई वुड लाइक टू गाइड यू।
I try my best to be fair to everyone. Not how to increase the thinking capacity. नहीं thinking capacity तो नहीं ऐसे बढ़ जाती है कोई. आप अपनी रैशनल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो. इमोशंस को हटाकर सोचो. ठीक है ना? एंड रीड माय बुक, इट विल गिव यू क्लैरिटी. और प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको ब्रेक डाउन करो. देन यू स्टार्ट गेटिंग आंसर्स इन पार्ट लाइक दैट, देन यू कैन सॉल्व द कंप्लीट थिंग. ये है. कैपेसिटी कोई ऐसे नहीं होता कि ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाए, ग्रे मैटर बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है. फाइन, सो दैट इज ठीक. Okay, then thanks a lot for attending our session and wish you all the best. I hope I have been able to answer your questions adequately. Good luck, all of you. God bless. Bye bye.